Assalamu Alaikum दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय डिलीशियस चैनल फ्लेवर्स इन प्लेट। आज हम आप सबके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है चिकन यखनी पुलाव। ये चाहे आप किसी भी मुल्क हो, इस रेसिपी को सबने ज़रूर देखा होगा, बनाया होगा अपने अपने तरीक़ों से। आज हम इसे बहुत ही सिंपल वे में बनाना सिखाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू एंड डिलीशियस रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं अब अपनी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चावल 1 किलो जिसे हमने भिगोकर रख दिया है, प्याज 1 अदद स्लाइस्ड किया हुआ, चिकन ½ किलो, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने की चम्मच, नमक 1 खाने की चम्मच, यखनी पुलाव मसाला 1 पैकेट, यह आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, कुटी लाल मिर्च 1 और आधी खाने की चम्मच, पानी 4 ग्लास, दही आधा कप, गरम मसाला पाउडर 1 और आधी चाय की चम्मच, धनिया ½ पंच, हरी मिर्च 2 से 3। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए 1 फ्राई प्याज। हम सबसे पहले चावल भिगोएंगे जिसके लिए हमने लिया है 1 किलो चावल। अब आप देख रहे होंगे कि कड़ी पत्ता चावल में क्या कर रहा है, तो मैं आपको बताती चलूं। अगर आप अपने स्टोर्ड चावल जो कि आपने किसी बाल्टी में या किसी भी चीज़ में डालकर रखे हैं तो इसमें लाजमी 4 से 5 कड़ी पत्ते डाल दें। इससे अब फ़ायदा ये होगा कि आपके चावलों को कभी कीड़ा नहीं लगेगा। अब हमने अपने चावलों को नॉर्मल टैप पानी से 2 से 3 दफ़ा धो लेना है। You're chilling in the rain.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. हैं और हमारे पुलाव को Thank you for watching our video. Keep following the channel for our next delicious recipe. Do you need some quick and easy recipes? Do let us know at our social links mentioned below. Take care. Allah Hafiz.